Hello friends, so I welcome you all in this video lecture series, and today we are going to discuss about the calculus of variation. This chapter is very easy, right? And what is the objective of this chapter? Basically in calculus of variation we optimize the functional, right? जो भी functional होता है उसे हम क्या करते हैं, optimize means either the maximize or minimize the path, right? So the aim of the calculus of variation is to explore method for finding the maximum or minimum of the functional. So in this chapter we deal with the functional and also we optimize these functional, right? So for example you can take this is the path, right? This is the path. आप let's suppose कर सकते हैं this is the two points, right? The first point that is a comma y a. You can also say that this is an ordered pair where the first represent the x and second represent the y, right? So let's suppose these are the 2 point in a some plane, right? In a some plane, a which coordinate is basically a comma y a that is x is equal to a, and ya which is basically corresponding to this a. In the similar way the second point is yb. इस एग्जाम्पल के थ्रू हम आसानी से समझ सकते हैं व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर. बेसिकली इफ वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द मिनिमम distance, or you can say that the minimum path between these 2 points, then you can just link these 2 points by a straight line, right? By in this way you can find the minimum path. But here the minimum distance, that is I, from a to b, a to the, let's suppose this point is capital B, so a to b ds, right? This is the minimum distance which will be covered from a to b. Now how we can basically how this formula comes. So you know the distance ds, let's suppose this is the minimum distance between the 2 point, and this coordinate is basically you can see as a ya, and this is the second coordinate yb. So this represent, you know, by Pythagoras theorem we can easily calculate this distance is basically ds and this is basically dy. So the distance dx square is equal to dx square plus dy square, or ds is equal to under root dx square plus dy square, or you just take dx as a common, so we can write under root 1 plus dy by dx whole square, and now this is basically equal to ds. So the s value, or you can say that the optimum path I, or the distance is equal to, once you calculate the value of s, and then you have to integrate both sides, and once you integrate this limit goes from a to b, right? Under root 1 plus dy by dx whole square and dx. So in this way we can calculate the optimum distance between the 2 points, or in another way we can say we can optimize any path, right? Any functional, you can say that we can optimize any functional. तो चलिए मैं आपको बताऊंगा इसमें सबसे इजी है Euler's approach, right? This is the particular case where we have discussed. Basically these type of functional contain 3 parameters. If it contain, first is the, you know, if it is contain only one independent variable, that is x, the corresponding value to this independent variable, that is yx, and also the derivative of this function, that is y dash x, right? So if the question are basically asked from this type, right, where you have to optimize this functional. So to find yx which maximize or minimize, right, minimizes the definite integral functional. Definite integral, or you can say that our objective is to optimize this functional, right, which contain basically x, yx and y dash x. If it is basically here in this case only one dependent and one independent
variable. So this approach basically to calculate or to find out the optimized path, or आप कह सकते हैं कि maximize or minimize the functional, right, is basically the Euler's approach. And here also the boundary conditions are given as at x is equal to a, the value of y is basically ya. In the similar way, at x is equal to b, the value of this function is basically yb, right? So this is called simplest variational problem. This is called simplest variational problem, or you can say that it is also the Euler's problem, right? So this these type of problem which can be optimized, and that is called Euler's equation, right? Now we basically optimize this functional. In your examination this equation is given, right, and you have to optimize. तो देखिए optimize का condition क्या है? There has a two equation given by Euler's Lagrange equation, right? We call it Euler's Lagrange equation. There has a two equation or two form where this function can be optimized. So if they satisfy this condition, then we can say that this is basically optimize the path, right? So y is equal to yx be the actual function which extremize I and satisfy the condition, right? Every solution of the Euler's equation which satisfy the boundary condition is called extremal. Extremal means very simple, maximize or minimize, or we can also say that the stationary function of the problem, right? देखिए why we say that stationary, because let's suppose we are interested to find out the maximum and minimum value of this functional. So you can say this is the stationary point, stationary or critical point where the function change, and also we can say that this is the extremal, means either it is maximum or minimum point, right? So it must satisfy these two equations. यही इक्वेशन आपको लर्न करनी है और यहीं से कंडीशन आपको पुट करके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे प्रॉब्लम. अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा. अभी बेसिकली इफ this function is given, basically this functional is given f that contain basically x, y and y dash, right? So how you can approach, you then if it is optimized, if it is extremal, extremal means either maximum or minimum, in that case it must satisfy this condition. देखिए कुछ भी नहीं करना है, डेल एफ बाई डेल वाई, जो आपको फंक्शन दिया है उसको वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश. यहाँ पे देखिए दोनों में दिस इज डेल एफ बाई डेल वाई डैश एंड दिस इज बेसिकली डेल एफ बाई डेल वाई, right? So if it is satisfy this condition, means the given functional satisfy this condition, we can say that it is basically optimal, right? And you will get the optimal condition also from this. Another form of the Euler's equation is d by dx f minus y dash del f by del y dash is equal to del f by del x. So these two equations you have to learn, and on this basis many problem are solved based on this. And there has a several cases also of this Euler's equation, or you can say that the Euler's Lagrange equation. देखिए बहुत आसान है, इसी से एक्सट्रैक्ट करके हम निकालते हैं. इफ द फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ y, अगर देखिए इंडिपेंडेंट होता है ये फंक्शन y का, तो क्या होगा, डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो. जब उस पर डिपेंड ही नहीं करता तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका जीरो होगा. एंड इन दैट केस इफ यू पुट दिस वैल्यू इन द फर्स्ट इक्वेशन, डेल एफ बाई डेल वाई की वैल्यू जीरो, आपका आ गया डी बाई डी एक्स डेल एफ बाई डेल वाई जीरो. नाउ वंस यू इंटीग्रेट दिस डिफरेंशिएशन विल बी cancelled out automatically. You will get del f by del y dash is equal to constant, right? So this is the first condition. I just explain this how the first condition comes, right? So the first case what we have seen, we have already seen the Euler's equation, that is del f by del y minus d by dx of del f by del y dash, right?
that is equal to 0. And in the first case we have seen, if this function f, which is basically independent on what? Independent on y. If it is independent on y and you integrate, you differentiate del f by del y, it will be 0 because it is independent of this y. Now once you put this value here, you will get this value is basically 0. So you will get only d by dx del f by del y dash is equal to 0. And once you integrate on both sides, you will get a integrating constant c, and this will be cancelled out. D by dx will be cancelled out by this integral. So you will get del f by del y dash is equal to constant, right? So this is the first case. If in the examination it asks the condition for which this function is optimal, and if it is independent of y, you can directly integrate f with respect to y dash and equate to constant, you will get the optimal value, right? Now the second case, if f is explicitly independent on x, and if it is independent on x, then you will get del f by del x is equal to 0, right? Del f by del x is equal to 0. Now you can use the second condition, because in the first condition there has no such del f by del x. Now you can use both of the equation and they are give the same solution, right? So since the del f by del x is equal to 0, you can just put this value is equal to 0, right? D by dx f minus y dash del f by del y dash is equal to 0. Since the right hand side of y, it becomes 0 because it is independent on the x, right? So finally if you integrate, you will get f minus y dash del f by del y dash is equal to constant. So this is the second equation, and this equation is applicable only if the function is basically f is independent of x, right? Now the third case, if f is independent on y dash, because you know this function capital F is basically function of three variables x, y and y dash. So sequentially we just move on. In the first case we have seen it is independent of y. In that case we get the condition. Second, if it is independent on x, then we get another condition. And now in the third case, if independent on y dash, then del f by del y dash, that is equal to 0. And then the first equation, what about the first equation? This del f by del y dash is equal to 0. So this will be 0. And now this equation reduce del f by del y is equal to 0. And later on I will discuss there has no meaning if for this case del f by del y is equal to 0. It is called meaningless. I will just explain later on this. Now the fourth case, if f is independent of x and y both, right? If it is independent on both the function x and y, in that case you will get del f by del x and del f by del y both are 0. Very simple. If f is independent on x and y, then partial derivative with respect to that will be 0. अच्छा देखिए, अगर ये 0 होता है तो in that case the Euler's equation become what? If basically this is calculated by this second equation, if del f by del x is equal to 0 and also del f by del y is equal to 0, and once you open this bracket, the first d by here del by del x f, you differentiate, and when you differentiate the second time, it will be y double dash del f by del y dash, right? Now we put y double dash del 2 f by del y dash is equal to 0, and this will be, if here the we apply del f by del y dash square is not equal to 0. If it is not equal to 0, in that case y double dash equal to 0, and once you integrate 2 times, you will get y is equal to c1x plus c2, and is the solution. So in the third case,
if it is independent on x and y, then you will get what? A straight line. This is the equation of the straight line. This is also a very important case if the given basically functional which contain only the function of y dash, right, which contain the function of only y dash, means it is independent on x and y. In that case you will get a straight line, right? Now here first we solve a few problems based on the above method or above technique, and then later on we move to the another topic. Now first, this question is asked in June 2011, and the question is from the part B. Here the variational problem of the extremizing the functional, you have to basically optimize this function which vary from 0 to 2 pi d by dx of y is square minus y square, right, dx. You have to optimize. So functional is already given. This functional is basically what? You can also write like this. This dy by dx means what? Y dash square and minus y square, right, minus y square. We have to optimize this, and this additional condition is also given. y0 is equal to 1 and y2 pi is equal to 1. Has we have to show since it is from the part B, so only one option is correct in this case. Now we have to tell about how many solutions are possible for this equation. It has unique solution, exactly 2 solution, an infinite number of solution, and also no solution. Which option is correct? So first we optimize by the Euler's equation. So by Euler's equation, df by del f by del y minus d by dx of del f by del y dash. We have seen this is the Euler's equation to optimize the path, right, and it must satisfy this equation, this functional, if it is optimized. So here the same thing, extremize function. We have to extremize this function and tell about whether it has unique solution, exactly 2 solution, infinite number of solution, or no solution. So you just put this value in this equation. So del f by del y means you have to differentiate this function partially with respect to y. You will get minus 2y, right, and d by dx and del f by del y dash. Once you differentiate with respect to y dash partially, you will get 2y dash, right, and again this is differentiable, d by dx of 2y dash, so it become y double dash, right, and minus here also minus 2, here also minus 2, it will be cancelled out. So finally we get y plus y double dash is equal to 0. If you remember, then this is very simple. This is second order basically linear differential equation. Second order linear differential equation, you can also write like this: d2 plus 1 y is equal to 0, right. So for this case, what we have to do, we just find the value of the roots d, right. Our objective is to find out the solution of this, and you know the solution of d square plus 1 is what? We have already studied in ordinary differential equation. If it is d square plus 1 y is equal to 0, then we put d is equal to m, and here we get m square plus 1 is equal to 0. The solution of this equation is basically y is equal to cf plus pi, right. Since the right hand side is 0, so pi will be 0. Only the cf can enough to tell about the solution of this given differential equation. Now m square, that is equal to minus 1, and you can also write I square, and that represent m is equal to plus minus iota, right. And you know, if the roots are basically imaginary, in that case the solution will be what? Here the basically real part is not given, only the imaginary part, so this becomes c1 cos 1x plus c2 sin x, right. This is the solution of the given differential equation. Now what about this? How many solutions are possible? First we just apply the boundary condition. So here the first boundary condition is given y0 is equal to 1. देखिए पहले हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी चाहिए.
तभी हम बता पाएंगे कितने सोल्यूशन पॉसिबल है। वैसे भी अब देखिए साइन कॉस है, इस एक्स एक्सिस को कितनी बार काटेगा, इट विल कट सोल्यूशन मीन्स व्हाट, वेयर इट कंप्लीटली सेटिस्फाई द गिवन। देखिए कॉस और साइन है, बहुत बार ये इसको कट करेगा, वेरी क्लियर। बट इवन वी जस्ट अप्लाई फर्स्ट द कंडीशन y0 is equal to 1. This is the first boundary condition. Here two boundary condition are given to find the value of the constant, integrating constant. So y0 is equal to 1 and once you apply x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे यहाँ पे देखिए and y की वैल्यू 1 आ जाएगी. So 1 is equal to what? Cos 0 that is 1, so C1, and sin 0 it is basically 0, so there has no second term, it will be 0. So finally we get C1 is equal to 1 by applying the first boundary condition. Now you just put this value here and we have this solution 1, so cos x, right, and plus C2 sin x. Now you just apply the second boundary condition. You just apply the second boundary condition. Second boundary is 2 pi is equal to 1. Once you put x is equal to 2 pi, so you know cos 2 pi that is 1, right, and it also given the value of y is 1, that is okay, and again the sin 2 pi which always 0, so there has no meaning of this term, only we get C1 is equal to 1. So finally this will be the solution. We cannot calculate the value of C2, and also since C2 is arbitrary value, you can take any value, means you can take infinite number of such constant that satisfy this equation, right. Now you can also see if it is satisfied, then it has infinite number of solution, right. Very clear. It is also sinusoidal function, so it cut x axis at many point, right, countably many point, or you can say that it has infinite number of solution. It can, you cannot say that it has unique solution, because there has a several such solution are possible by just changing the C2, right. Exactly 2 solution, it is also wrong. There has no solution, it is also wrong. So these type of question are basically solved by this technique. Now we just move on another question. We have to find out the extremal of this function, and there has a 4 option. Again if you look here, then this equation is given 1 plus y square, right, 1 plus y square upon y dash, right, through the origin. It is also given, it is passes through the origin and the point 1 1. So 2 conditions are given here. If you look, the first is given at x is equal to 0, the value of y is also 0, right, and the second condition is given at x is equal to 1, y is basically 1, right. So the functional is given basically 1 plus y square upon y dash. You can apply the both of the approach, either it is independent of y, x, right, or if it is independent of x, then you know we have already seen this case, f minus y dash del f by del y dash is equal to constant, right. So f, that is 1 plus y square upon y dash square minus y dash into del f by del y dash. So del f by del y dash, इसी को आपको y dash के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है. You will get what? देखिए यहाँ y dash डिनोमिनेटर में है, दिस विल बी -1 ऊपर जाएगा, और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे देखिए y dash, then you will get -1 upon y dash square, right. You will get this solution. So you just put -1 upon y dash square, and here rest of the things are already available. Y dash 1 plus y square upon y dash square into -1, so is equal to constant. So here both are basically same, plus plus become, देखिए यहाँ से y dash will be cancelled out by this, so you will get 2 times of what, 2 times of 1 plus y square upon y dash equal to 7, और देखिए यहाँ y dash कोई मतलब नहीं है, ये दोनों कैंसिल ही हैं, और यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे y dash की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो दिस विल बी मूव ऑन हियर, और ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट द सोल्यूशन, राइट. एंड हियर dy by dx is equal to what?
आप यहाँ पे कोई नया भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, c या c1 जो भी है, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट बराबर हो जाएगा, राइट। आप ये देखिए कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 2 है, 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए फिर भी वो एक कांस्टेंट ही आएगा। सो वाई डैश इज इक्वल टू, यू विल गेट c1 1 प्लस वाई स्क्वायर। you can write also the another constant, right? First you just write this is c, right? This is c, and now after the multiplication it becomes c1, right? So dy by dx is equal to c1 1 plus y square, and you can write dy upon 1 plus y square is equal to c1 dx। तो आपको पता है ये इंटीग्रेशन किसका होता है, tan इनवर्स y का। once you integrate tan inverse y is equal to c1 x plus c2। देखिए here we have to find out the optimum value in term of y, right? सारे में देखिए y is equal to दिया, तो हमें ये y के टर्म में निकालना पड़ेगा। so y is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इस साइड में जाएगा, you will get y is equal to what, tan once you move this tan inverse here, it will be become simply c1x plus c2, right? Now you can apply the boundary condition and get the value of c1 and c2। so the first boundary condition is given at x is equal to 0, y is also 0। so आप जानते हैं tan की वैल्यू 0 पे 0 रखेंगे तो c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि tan इनवर्स आपको पता है 0 की वैल्यू 0 ही होती है। so 0 प्लस c2 ये होगा फॉर द फर्स्ट कंडीशन, यू विल गेट c2 इज इक्वल टू 0। तो पहले c2 की वैल्यू निकल चुकी है, अब c1 की वैल्यू निकाल लीजिए बाय दिस कंडीशन। सो 1 1, once you put x is equal to 1, so tan inverse 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की, राइट। दिस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ x की जगह 1 पुट करिए, एंड दिस c1 प्लस c2 पहले ही आपने कैलकुलेट कर रखा है 0, कोई मतलब नहीं है, c1 की वैल्यू पाई बाई 4 आ गई। सो फाइनली वी गेट व्हाट, y इज इक्वल टू tan, this value c1 is basically pi by 4, so x pi by 4, y is equal to tan x pi by 4। so which option is correct, this second option is basically correct, because rest of the, ये tan inverse कह रहा है ये तो गलत है, x pi by 2 ये sec कह रहा है ये भी गलत है, this sin inverse this is also wrong। so in this way you can very easily solve the problem related to the variation of parameter, right? now I just tell you a few more important cases. These cases are also very important। shortest distance between the 2 point in the plane, we have already calculated these type of, and also if for this case you can solve very easily, basically this is the case 1 plus y square, right? 1 plus y dash square। if it is we have already seen, if the function is independent on x and y, we always get a straight line। मैंने ऊपर आपको दिखाया ही है, देखिए यहाँ पे केसेस। तो आपको अगर फंक्शनल में किस तरीके का फंक्शन दिया है, सो नो नीड टू कैलकुलेट एनीथिंग, इफ इट इज इंडिपेंडेंट ऑन x and y, ओनली दिस f इज फंक्शन ऑफ y डैश, इन दैट केस वी गेट द स्ट्रेट लाइन। तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल आपको देखने से पता चल रहा है, दिस कंटेन ओनली व्हाट, द y डैश, दिस मीन्स दैट यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो अगर कहीं इस तरीके का प्रॉब्लम आया तो आप कर लेंगे। मिनिमाइजिंग द सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, लेट सपोज दीज आर द 2 पॉइंट दैट इज गिवन एंड यू हैव टू रोटेट दिस पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस। अगर रोटेट करेंगे तो देखिए कैसे होगा, एक्स एक्सिस के रोटेट करेंगे, सो दिस बिकम दिस टाइप ऑफ सरफेस, राइट। वंस यू रोटेट अलोंग दिस एक्स एक्सिस यू विल गेट दिस सरफेस, राइट। इसको इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेट करेंगे तो ऐसे सरफेस जनरेट होगा। सो हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज दैट सरफेस, सो द सरफेस जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन and we have to minimize the surface area, so you have to learn this is the minimum surface area, that is 2 pi a to b y ds, and y की वैल्यू ये होगी आपकी 2 pi a to b y under root 1 plus y dash dx, right? And after solving this equation by the Euler's method, you will get this path, right? Y is equal to c cos hyperbolic x by c plus k. So if any 2 point is revolve around the x axis, you can say this is the optimum solution, right?
ऑप्टिमाइज तभी होगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। इन द सिमिलर वे फंक्शन इन्वॉल्विंग हायर डेरिवेटिव, राइट, हायर डेरिवेटिव देखिए, अगर अभी हमने क्या देखा कि ओनली इट कंटेन द फंक्शन ऑफ थ्री थिंग्स एक्स वाई एंड वाई डैश। लेट सपोज it is also contain the higher derivative like y double dash, right, y triple dash. Then what you do, for which case the optimal path is basically this function is contain x y y dash and y double dash. Now the Euler's equation in this case, del f by del y minus d by dx del f by del y dash plus d2 upon dx square del f by del y dash. I just tell you how you can find such cases. Here the things are same. अब इसके बाद जो भी होगा ये अल्टरनेट करके आएगा। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पे d2i अपॉन dx स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव ये जैसे ही बढ़ता चला जाएगा वैसे ही आप अल्टरनेट करके ये आप प्लस करते चले जाएंगे। जैसे लेट सपोज कर लीजिए दिस इज द फर्स्ट केस वेयर y double dash is given, so you just differentiate one more time. Let's suppose it is given y nth derivative, then what you do, you देखिए यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस फिर माइनस एंड अगेन द डेरिवेटिव विल बी इंक्रीज। हियर डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स आप डेल एफ बाई डेल वाई डैश प्लस डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल एफ बाई डेल वाई डबल डैश, यहाँ डी नहीं यहाँ डी कर लीजिएगा, दिस इज बेसिकली डी माइनस डेल क्यू अपॉन डी एक्स क्यू डेल एफ बाई डेल वाई ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश मीन्स वाई थ्री टाइम्स डिफरेंशिएबल, राइट। सो अगर आपको डेरिवेटिव के फॉर्म में दिया, मैक्सिमम वो सेकेंड डेरिवेटिव तक देता है, तो आपको अल्टरनेट करके प्लस माइनस और वो टेक्निक वैसे यूज करनी, डी बाई डी एक्स यहाँ डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओनली यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इट विल बी चेंज एंड ऑल्सो द पावर विल बी इंक्रीज विद द अल्टरनेटिंग प्लस माइनस साइन, राइट। तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चंस आए गए हैं। नेक्स्ट इज पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। कभी कभी पैरामेट्रिक फॉर्म में भी दिया है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए x की वैल्यू xt और y की वैल्यू yt के फॉर्म में दिया है, देन व्हाट विल बी द ऑप्टिमम पाथ। इन दैट केस फर्स्ट यू जस्ट फाइंड दिस x y डैश, इस तरीके से आप फंक्शन को बना लेंगे जी x y x डैश, x डॉट मीन्स व्हाट the differentiation with respect to t, right, and y dot means the differentiation of y with respect to t, right, means parametric form में आप इसे बना लेंगे x y x dot and y dot, and then you write these two equation and these two basically represent the optimum path। देखिए आपको ये जो फंक्शन दिया है इसको किस में कन्वर्ट करना, बाई दिस फंक्शन, वेरी इजी। जो भी फंक्शन दिया एक्स वाई वाई डैश उसको आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। नाउ दिस बिकम डेल जी बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल टी आप डेल जी बाई डेल एक्स डॉट, राइट, डेल एक्स डॉट। सेकेंड इक्वेशन डेल जी बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल टी डेल जी बाई डेल वाई डॉट। सो दीज टू आर बेसिकली रिप्रेजेंट द ऑप्टिमम condition for parametric form, right? So Euler's Lagrange equation for the function of two variable for the function of parametric form, right? In the case of parametric form this will be the optimum condition. Now there has one more case, variational problem involving more than one independent variable. These type of question are also asked, very important and very simple. Let's suppose here till we have seen what, how many independent variable, one independent variable is x, and now let's suppose this z is the dependent variable and there has two independent variable that is x and y. Then what will be the basically the Euler's Lagrange equation for the optimize these type of equation or function. So if it contain what more than one independent variable, then the function become what, x y। ये तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, z दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ने से कितने सारे नए फंक्शन जनरेट होंगे। हियर डेल z बाई डेल x, वहां पे हम प्रीवियस में क्या पढ़ते थे, dy बाई dx, नाउ डेल z बाई डेल x
एंड ऑल्सो अनदर, देखिए दोनों का डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होगा, डेल जेड बाई डेल एक्स एंड डेल जेड बाई डेल वाई. सो दिस कंटेन एक्स वाई जेड डेल जेड एक्स एंड जेड वाई, राइट. देखिए यहाँ लिख भी दिया है, बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया है, इंटीग्रेशन एफ, राइट, विच कंटेन बेसिकली व्हाट, एक्स वाई जेड and this del zx that is represented by small p and zy that is represented by small q. so कई बुक्स में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया है, दोनों ही नोटेशन के मैंने लिख दिया. सो इन दैट केस दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. आप यहाँ क्या करते थे एलर्स इक्वेशन में, डेल एफ बाई डेल वाई, मतलब वहां पे जब एक वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल वाई था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो यहाँ तो डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करते थे. नाउ इन दिस केस ऑल्सो वी डू द सेम थिंग, डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डी बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई, यहाँ डेल की जगह डी लिखिए, दैट इज द करेक्ट, डी बाई डी एक्स, डेल एफ बाई डेल जेड एक्स, राइट. आर इसको बोल सकते हैं पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है. वही सेम चीज वाई डैश यहाँ पे हम यूज करते थे, इन प्लेस ऑफ वाई डैश वी कम जेड एक्स, राइट. वाई डैश मीन्स व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स. वही सेम चीज है यहाँ पे. देखिए दो वेरिएबल आ गए तो दो बार हमें ये करना पड़ेगा, क्या, आयलर्स इक्वेशन. सो डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डी बाई डी एक्स, डेल एफ बाई डेल जेड एक्स माइनस डेल बाई डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई, राइट, जेड वाई. एंड ऑल्सो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल पी. देखिए एक्स है तो पी है, वाई है तो क्यू है. वेरी इजी इफ इट इज गिवन basically in term of x and y, means if there has a two independent variable, in that case this will be the, दोनों एक ही इक्वेशन है, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दोनों के पास नोटेशन मैंने कुछ बुक्स में जेड की जगह p लिखा हुआ, आपको ये पीडी में पढ़ाया ही है, डेल जेड बाई डेल एक्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल p, right. So now you just try to solve all these questions related to variation of parameter. Very easy this case, right. Now one more case, there has a question asked in CSIR based on these function. Basically they ask about weak minima, strong minima, weak maxima, strong maxima. This is also a very easy case. It asks about these four condition. I just tell you the condition when it is weak minima, strong minima, because question are asked on this. So you just only learn the condition when we say that it is weak minima, strong minima, weak maxima and strong maxima. Later on I will explain by a graph how, what is the meaning of basically weak minima and weak maxima, strong minima. So देखिए पहले दोनों केस में मैंने वीक लिया है, मिनिमा लिया है, तो एक होता है वीक मिनिमा बोलते हैं, एक स्ट्रांग मिनिमा. इन बोथ ऑफ द केस दिस, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं विथ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई डैश टू टाइम, मीन्स वाई एफ वाई डैश इट विल बी ग्रेटर देन जीरो फॉर सम वाई डैश. अगर कुछ वाई डैश के लिए इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आती है, रेस्ट के लिए ग्रेटर देन जीरो नहीं आती, इन दैट केस यू से दैट वीक मिनिमा. कब बोलेंगे स्ट्रॉन्ग मिनिमा, इफ फॉर ऑल वाई डैश दिस फंक्शन दैट इज वाई एफ वाई डैश इज ग्रेटर देन जीरो, वी से दैट इट इज स्ट्रॉन्ग मिनिमा. तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया व्हाट इज मिनिमा. के केस में दोनों में ग्रेटर देन जीरो आएगा, बट इफ इट इज फॉर सम वाई डैश इट इज कॉल्ड वीक मिनिमा. इफ इट इज दिस कंडीशन सेटिस्फाई फॉर ऑल वाई डैश, वी से दैट इट इज स्ट्रॉन्ग minima. Now next is maxima. When we say that it is maxima, if f y dash into y dash is less than 0, we say that it is basically the maxima. देखिए दोनों ही अपोजिट है, ग्रेटर देन 0 के केस में मिनिमा बोलेंगे एंड लेस देन के केस में. फिर उसी तरीके से वीक कब बोलेंगे, वीक मैक्सिमा इफ इट इज सेटिस्फाई सम वाई डैश फॉर सम वाई डैश क्लोज टू पी. अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में जहां पे हम निकाल रहे हैं, अगर कुछ पॉइंट पे ये वाई डैश की वैल्यू क्या आ जाए, इफ इट इज बेसिकली व्हाट लेस देन जीरो फॉर सम वाई डैश क्लोज टू पी, देन वी से दैट इट इज वीक मैक्सिमा. अगर सबके लिए आ गया फॉर ऑल वाई डैश, वी से दैट स्ट्रॉन्ग
maxima, right? So this condition is also very important. Few question basically in CSIR ask based on this condition. So you just only, this is also called Legendre condition. These conditions are called Legendre condition. So I just explain most of the things related to the extremal, right, or variation of parameter, right? So देखिए कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इसी को COV भी बोलते हैं और वेरिएशनल प्रॉब्लम भी बोलते हैं, राइट, और एक्सट्रीमल कंडीशन। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया। अब आगे जितने प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, उन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करिए और फिर कोशिश करेंगे कि इस पे और भी लेक्चर प्रोवाइड करने के लिए, राइट। बट अभी आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सारे कंडीशन से सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।